Good morning, students. Welcome to your biology class. Students, today we are going to discuss the last chapter of the lesson 13, Why Do We Fall Ill? And the topic is Principles of Prevention. Means ki how we can prevent the spread of infectious diseases, or how we can prevent ourselves, how can we can protect ourselves from getting diseased. That is the topic today we will discuss. Before that, students, please see the last topic that is we discussed is the principles of treatment. So as we know that principles of treatment, number one, to reduce the effects of the disease, or we give symptomatic treatment. Number two, to kill the cause of the diseases, means the infectious agents or pathogens. Now, what are the different limitations of treatment? So, all of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. But there are three limitations, students, while doing the approaches of the treatment. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged, and maybe or may not be they recover completely. Secondly, limitations of treatment. The second is that treatment with will take time, means the loss of working hours will be there, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time. Even a proper treatment is given, but a bed time जो है उनको the disease person, they have to give some time for rest during the treatment, so there will be loss of working hours. Thirdly, the person suffering from an infectious disease can serve as a source from where infection may spread to other people. This leads to the multiplication of the above difficulties. Number of patients will increase, and it is because of such reasons that it is said prevention of diseases is better than their cure. Okay, prevention is much better than cure. आपने बहुत अच्छे से सुना होगा. Now see, friends, what are the principles of prevention? How can we prevent diseases? There are two ways. One is general and another one is specific to each disease, है ना? The general ways of preventing infections mostly relate to preventing exposure. जो जनरल वेज है स्टूडेंट, जनरली वो हमें बचाते हैं किस चीज़ से कि हम उन डिजीजेस से एक्सपोज ही ना हो पाए. हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीजेस? देखिए कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि बचा सकते हैं, ताकि हम उन डिजीजेस से के एक्सपोजर में ना आए. इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम उनके स्प्रेड होने के मोड्स के ऊपर देखें, फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. मीन्स कि अगर एयरबॉर्न डिजीजेज हैं स्टूडेंट्स, so we should be living in clean surroundings, less crowded, airy and open habitats. Okay. Secondly, for waterborne diseases, the diseases which occur due to the consumption of contaminated water, we can prevent exposure by providing safe drinking water. These are public health measures, students. अगर हम publicly बात करें, community की बात करें, so safe drinking water, clean drinking water we should consume, and this can be done by treating the water to kill any microbial contamination. So clean, filtered, chlorinated, जिसे हम purify करते हैं water को, and germ free water should be consumed by the people. Thirdly, students, for vector borne diseases, means the diseases which are caused by the organisms, we can provide clean environment. Clean environment should be there. This would not, for example, allow mosquito breeding. Student, अगर clean environment है, hygienic conditions है, there is no stagnant water, proper sewage disposal है, then like example is given, mosquito breeding will not happen. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious diseases. Okay, community health education, students, we should aware the people, okay, which will help them to know about the causes of the disease, about the spread of the disease, about the treatment of that disease, so that
we can prevent ourselves or protect ourselves from these diseases. Now, if we talk about some general ways of preventing infectious diseases, students, in addition to these issues that relate to the environment, there are some general principles also. Environment के अलावा clean living surroundings है, air है, water है, इनके अलावा अगर आप देखें, there are some general ways जिससे हम अपने आप को infectious diseases से बचा सकते हैं. Number one, nourishing and balanced diet means कि availability of proper and sufficient food for everyone, because student, as you know कि ये जो हमारा nutritious food है, like proteins, carbohydrate, fat, vitamin, minerals and roughage etc., these are the nutrients present in it, and they provide a better environment in our body for growth and to remain healthy. Okay, as you know that proteins, it helps in our growth and repair of the body cells and tissues, so these nutrients are very much important for us. Secondly, care of one's own body, that is personal hygiene. Friends, personal hygiene like cleanliness, physical exercise, okay, proper rest, proper sleep and healthy habits one should follow to get prevent from infectious diseases. Now, like regular physical exercise, proper rest and sleep, clean food, clean water, clean air, like we have discussed before this topic, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. Also the clean surrounding, they prevent spread of infectious diseases. So personally अगर हम देखें students, these are the general ways, that's how we can prevent ourselves from the infectious diseases. Now next we have, what are the specific ways of preventing infectious diseases? Specific means special ways according to the disease. They relate to a peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infections. Students, आपको मालूम है, our immune system, it fights with the diseases. Okay, let's understand this thing with the help of an example. These days there is no smallpox anywhere in the world. अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सालों पहले smallpox नाम की बीमारी थी एंड पेंडेमिक हुआ था इस तरह से, बट अब नहीं है. बट as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease. जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले कोरोना में भी देखा होगा. Since they were afraid of catching the disease, some corona patients, nobody wants to go near them कि कहीं हमें भी ना हो जाए. However, there was one group of people who did not have this fear. और कौन सा ग्रुप था ये? These people would provide nursing care for the victims of smallpox. इन्होंने इन लोगों की केयर की. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring. मतलब कि ये लोग वो थे जिन्हें पहले smallpox हो चुका था और survive कर रहे थे. In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. So having the disease once was a means of preventing the मतलब सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज. अभी अगर एक बार हमें हो चुका है, जैसे चिकन पॉक्स को भी माना जाता है कि अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है. दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन इट रिमेंबर्स स्पेसिफिकली, उसको याद रहता है. सो नेक्स्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और इट्स क्लोज रिलेटिव्स एंटर द बॉडी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन ग्रेटर विगर, और ज़्यादा एनर्जी से ही हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है. दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम. दिस इज द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. स्टूडेंट, जो वैक्सीनेशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है. What is vaccination? Actually, vaccination is a method to prevent spread of infectious diseases. Okay, and we can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory. हम immune system को एक तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो अपनी जो memory उसको डेवलप करा सकते हैं एक particular infection के लिए, by putting some weak or dead pathogens of that particular disease. Okay, that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. तो जिस microbe के against हम वैक्सीन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं स्टूडेंट, उसी वैक्सीन
के लिए हम उसी डिजीज़ के डेड या वीकेंड पैथोजेंस को हम अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं. एंड व्हेन ऑन एंटरिंग द बॉडी, जो पैथोजन है, इट स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज by the B lymphocytes of our immune system. B lymphocytes, students, B lymphocyte, they produce antibodies. ये antibodies produce करते हैं when they come in contact with foreign antigens or any pathogen. जब वो किसी भी pathogen या antigen के, antigen क्या है student? Antigen can be a protein, okay, it can be a carbohydrate molecule, okay, and these molecules can be on the surface of a pathogen. तो पैथोजेंस या एंटीजेंस के कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड जो हमारी बॉडी है उसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी. सो इस तरह से वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है, लाइक टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज इन द कम्युनिटी, वैक्सीनेशन वो मेथड है. और प्रिंसिपल जो है हमारा, बेसिक जो प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का, वो यही है कि जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और उस वैक्सीन में जो वीक और डेड माइक्रोब्स हैं उस डिजीज़ के, उन्हें हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है. ओके, this does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. तो ये नहीं है कि ये जो, क्योंकि बहुत वीक माइक्रोब्स है तो हमारी बॉडी में वो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारी बॉडी को बचाएंगे अगर कोई ऐसा माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और एक्चुअल जो वो डिजीज़ करने वाला है वो डिजीज़ नहीं होता है. ओके, सो इन दिस वे हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको भी, ये जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन आवर बॉडी एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. ओके, बाय गिविंग एक्सपोजर टू सच माइक्रोब्स. So what is immunization, student? It is a process by which a person is made resistant to a particular disease by the administration of a vaccine. जब कोई वैक्सीन लगाई जाती है और वो जो वैक्सीन होती है हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजन से हमारी बॉडी को रेसिस्टेंट बना देती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीन क्या करती है स्टूडेंट? वैक्सीन इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है to prevent certain diseases. This process has proved beneficial in preventing several infectious diseases and has decreased the mortality rate. Mortality means student death rate to a great extent. So इस process से, इस immunization process से, अब देखिए immunity जो है वो भी हमारी 2 types से इंक्रीज होती है. नेचुरली अगर हम इम्यूनिटी देखें, हमारी बॉडी जो है स्टूडेंट्स, इट मेक्स एंटीबॉडीज़, हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद सम इन्फेक्शियस डिजीज एंड वी बिकम इम्यून टू दैट इन्फेक्शन ऑफ दैट पैथोजन. ठीक है. और अगर देखें आर्टिफिशियली हमें इम्यूनिटी जो प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंजेक्टिंग किल्ड, डेड और वीकेंड पैथोजेंस थ्रू अ वैक्सीन, जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं. जो वैक्सीन है इट इज़ वीक इनफ टू कॉज द डिजीज, बट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बी लिम्फोसाइट जब स्टिमुलेट होते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. ओके, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है स्टूडेंट्स, मे बी वो थोड़ा सा टेम्परेरी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होता है. अभी आपने देखा जैसे हमें कोरोना वैक्सीनेशन, अब दोबारा से बूस्टर डोज स्टार्ट हो गई है, एक टाइम पीरियड के लिए रहती हैं ये सॉरी. देन बट जो नेचुरल हमारी इम्यूनिटी है वो लॉन्गर टाइम तक हमारे बॉडी में रहती है. ओके, वो हमारी बॉडी को डिपेंड करते हैं. बट इम्यूनिटी लेने के लिए भी हमें स्टूडेंट्स वी हैव टू बी वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ताकि बार बार हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीजेस एंटर ना करें, अदरवाइज इम्यूनिटी भी फिर वीक पड़ जाती है हमारी. ओके, देयर आर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स
for childhood immunization to prevent any infection throughout our lives. तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे लोगों को पता चले, सो दैट पीपल गेट अवेयर कि हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर किड्स फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस थ्रू द वैक्सीन्स, लाइक टिटनस है, स्मॉल पॉक्स है, और मीजल्स है, MMR है, देन ऑरल पोलियो वैक्सीन जिसे हम OPV बोलते हैं, टाइफॉइड वैक्सीन है, देन DPT वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस, BCG वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाई जाती है. देयर आर वेरियस वैक्सीन्स. एंड यू नो हु डिस्कवर्ड वैक्सीन? Edward Jenner. Edward Jenner was the first person who actually developed vaccine in 1796. So students, by this topic, the topics are completed. On the basis of this video, I have prepared one worksheet. I hope ki you will just do these worksheets also and complete all the worksheets of this lesson. Okay, thank you students, thanks a lot.